ICSE Mathematics Class 9th, Exercise 2B. Calculate the amount and the compound interest by using the formula for compound interest. So question number 1 is here. Principal is given, that is 625. Rate of interest, that is 4% per annum. Time is 2 years. So the formula for amount is P 1 plus R by 100 raised to power T. So 625 in the bracket, inside the bracket, 1 plus 4 by 100 whole raised to power 2. So it will be equal to, just solve it, you will get 26 by 25. So 26 ka square by 25 ka square. It will become now here 26 ka square, that will be equal to 676. So this will be the amount. Now compound interest will be 676 minus 625, that will be equal to 51. And it is the answer of question number 1. Now come to the question number 2, where principal is 8,000, rate of interest is 15% per annum, time is 3 years. So amount will be equal to 8,000 outside of the bracket, inside 1 plus 15 by 100 whole raised to power 3. So here just divide it by 5, 3 by 20. Now convert it into improper fraction, that will be 23 by 20 whole raised to power 3. अब देखिए ये 8,000 will be cancelled by 20 क्यूब, 20 क्यूब का 8,000 है, कैंसिल हो गया. Now we are left with the 23 cube and it will be equal to 12,167. मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा क्यूब करने का एक तरीका. जैसे मान लीजिए यहाँ पर 23 का क्यूब है, तो या तो आप लेफ्ट साइड के डिजिट मीन्स 10th प्लेस के डिजिट का क्यूब करके लिख दीजिए, मीन्स 2 का क्यूब 8 होता है, 8 लिख दिया. और उसमें अगर आप राइट साइड को प्रोसीड कर रहे हैं तो 3 by 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. 3 by go on just multiplying it by 3 by 2. The ratio of these two digits, that 3 by 2. You will get 12 here. Again 12 will be divided by 3 by 2. You will get 18. Again 18 will be multiplied by 3 by 2. Again you will get 27. If you have written 27 here earlier first, then while you are proceeding left side, then you have to multiply 27 by 2 by 3. You will get 18. Again you will multiply it by 2 by 3. You will get 12. And again you divide it by 2 by 3. You will get 8. Now the middle part is 12 and 18. You take the double of it. Means 18 का डबल कितना हो जाएगा? 36. 12 का डबल कितना हो जाएगा? 24. So here 8, 12, 18, 27. मिडिल के जो दो हैं इनको डबल करके लिखिए और प्लस करके लिख दीजिए. अब देखिए यहाँ पर मैंने 54 आ गया, यहाँ पर 36 आ गया, ये 27 आ गया, ये 8 आ गया. Now take 7 and 2 will be carried to this, it will be added to the 54. Now it will become 56. Write down 6 here. Take 5 to this place and add it. 36 plus 5, that will be 41. Write down 1 here and 4 carry. 8 plus 4, that is 12. So in this way you can find out the cube of 2-digit number. Now the compound interest. Compound interest will be equal to amount minus principal. So 12,167 minus 8,000, that will be equal to 4,167, and it is the required answer of question number 2. Now come to the question number 3, where principal is 1,000, rate of interest is 10%, time is 3 years. So the amount will be equal to 1,000
Inside the bracket you write down 1 plus 10 by 100 whole raised to power 3. So 1000 into 11 का cube by 10 का cube. This 1000 will be cancelled by 10 cube. Now we are left with the 11 cube. Write down 1331, which is the cube of 11. So the compound interest will be equal to 1331 minus 1000. It will be equal to 331, means 331. Now come to the question number 4, where principal is 8,000, rate of interest is 10%, half yearly, and time is 1.5 years, that is 3 half. So far द रेट हाफ ईयरली वर्कआउट किया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, 10 जो रेट है उसको डिवाइड कर देंगे हम. देखिए अमाउंट विल बी इक्वल टू 8,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 10 बाई 2. वाई 10 बाई 2? क्योंकि रेट इज बीइंग वर्कड आउट बाई हाफ ईयरली. तो 10 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 100 रेस्ट पावर 3 क्यों कर दिया? 3 हाफ, 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर्स होंगे, तो पावर 3 कर दिया हमने. सो 8,000 प्लस 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस 5 बाई 100 होल रेस्ट टू पावर 3, दैट विल बी इक्वल टू 8,000 इंटू 21 का क्यूब बाई 20 क्यूब. 20 का क्यूब 8,000 से कैंसिल हो जाएगा. इट विल वी आर लेफ्ट विद द 21 क्यूब, एंड दैट विल बी इक्वल टू 9,261. नाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 9,261 minus 8,000, it will be equal to 1,261. This will be the compound interest. Now come to the question number 5, where principal is 700. You see the principal is 700, rate of interest is 20% half yearly. Time is 1.5 year. So the principal, that is 700, rate 20 divided by 2, that is 10%, because it is half yearly worked out किया जा रहा है. Number of half years will be 3 in 1.5 years. Amount will be equal to 700 inside the bracket 1 plus 10 by 100 whole raised to power 3. 700 into 11 का cube by 10 का क्यूब. सो 700 इंटू 1,331 डिवाइडेड बाई 1,000. अब ये कैंसिल किया. 9,317 डिवाइडेड बाई 10, इट विल बी 931.70. द अमाउंट विल बी इक्वल टू 931.70. Now the compound interest will be 931.70 minus 700. It will be equal to 231.70. This will be the required answer of the question number 5. Now come to the question number 6. Question number 6 states that Sangeeta lent rupees 40,960 to Amar to purchase a swap at 12.5% per annum. If the interest is compounded semi-annually, means half yearly, find the interest paid by Amar after 1.5 years. अब देखिए 1.5 years में कितने हैं? 1.5 year में कितने हाफ ईयर होंगे? 3 होंगे. और ये 12.5% रेट है. इट विल बी रिड्यूस टू हाफ. देखिए यहाँ पर 12.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6.25. हाफ ईयरली रेट जो होगा 6.25 होगा. प्रिंसिपल दिया हुआ 40,960. टाइम इज 1.5 year, दैट इज 3 half years. So compound interest will be equal to, I have written the formula for here for compound interest, that is P outside of the bracket. Inside there is a small bracket 1 plus R by 100 whole raised to power time T minus 1, bracket closed. So 40,960 inside the bracket, outside of the bracket, inside the bracket you see 1 plus 6.25 divided by 100 raised to power 3 minus 1,
ब्रैकेट क्लोज. तो 40,960 एज इट इज. इसको सॉल्व किया फर्दर, विल गेट 1 plus 1 by 16, 1 plus 1 by 16 whole raised to power 3 minus 1. अब मैंने यहाँ पर फर्दर सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे हाउ इट हैज कम. 625 divided by 1000 into 1000, or sorry, 100 into 100, it will be reduced to the 1 by 16. Now, after solving it, 40,960 inside the bracket, 17 by 16 raised to power 3 minus 1, that will be equal to 40,960. That will be 17 cube minus 16 cube upon 16 का cube. अब देखिए 40,960. अब मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लागू किया है. a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी. इन द सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. So 17 minus 6, 17 का स्क्वायर प्लस 17 into 16 प्लस 16 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ये 16 का क्यूब किया. 16 का क्यूब कितना आया है? 4,096. अब 4,096 will cancel this one. 40,960, it will be equal to 10 now. So 10 into, अभी यहाँ पर 17 का क्यूब 289 प्लस 17 into 16, that is 272. 16 का क्यूब 256, ब्रैकेट क्लोज. सो 10 into 817, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 that will be multiplied and it will become 8,170, and this is the required answer for question number 6. Compound interest will be 8,170. Now come to the question number 7. Question number 7 states that Sudhir lent rupees 2,000 at compound interest at 10% payable yearly, while Prashant lent 2,000 at compound interest at 10% payable half yearly. Find the difference in the interest received by the Sudhir and Prashant at the end of the 1 year. अब देखिए, एक जो व्यक्ति है वो क्या करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली रेट पर दे देता है. रेट रहता है वही, एनुअल रेट वही रहता है, लेकिन एक को देता है हाफ ईयरली और एक को देता है ईयरली. हाफ ईयरली विल बी मच मोर. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने वर्कआउट किया. यहाँ पर देखिए 2000 इनसाइड द ब्रैकेट 1 plus 10 by 2 होल डिवाइडेड बाई 100, कंप्लीट ब्रैकेट में रेस्ट टू पावर 2 minus 1 minus 2000 1 plus 10 by 100 raised to power 1 minus 1. So it will be, if you solve it करेंगे इसको, we will get here 21 by 20 raised to power 2 minus 1. Here it will be, मैंने क्या किया, 2000 को पहले ही कॉमन बाहर ले लिया है. 21 by 20 होल रेस्ट टू पावर 2 minus 1 minus 11 by 10. यहाँ पर सॉल्व किया इसको. 11 by 10 प्लस 1. यहाँ पर माइनस जाएगा तो इट विल बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस. So this minus 1 and plus 1 cancelled. So we are left with 441 means 441 upon 400 minus 11 by 10. So LCM हो जाएगा आपका 400. तो 40 से मल्टीप्लाई किया 11 को, 440 मीन्स 441 माइनस 440 होल डिवाइडेड बाई 400. You will get 1 as a numerator. So 2000 into 1 by 400, it will be equal to 5. So the difference is 5 rupees. And this is the required answer of question number 7. That's all.